Dear students, let us start exercise 10.4. Question number 1. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. Let us start question number 1. Two circles intersect each other. The radii फर्स्ट की 5 एंड सेकंड की 3 सेंटीमीटर है और कॉमन कोड गिवन है CD. फॉर ट्रायंगल ABC, फर्स्ट साइड A is equal to 3 centimeter, second side 4 centimeter and third side given is 5 centimeter. So we have to find the area of triangle in first. So for semi parameter you have to put the formula A plus B plus C upon 2 means 3 plus 4 plus 5 upon 2. In 9 plus 3 12 upon 2, 2 6 the 12, so S is equal to 6. Area of triangle ABC is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C whole or over root. So S is 6, 6 minus 3, 6 minus 4 and 6 minus 5. 6 में 3, 6 में से 4 2, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1. सो यू हैव टू राइट एज फैक्टर 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 3 कैंसल विद रूट. सो यू गेट 3 to the 6 centimeter square is the area of area of triangle ABC is equal to 6. Put the formula half into base into height. Base is 4, 2 to the 4, 2 multiply हो रहा है इधर आके क्या होगा divide 2 3 the 6. So CD means height CE. You have to find 3 centimeter. So you have to find the height of length of CD means double of CE. So write as 2 into CE यानी 2 into 3 यानी 6 centimeter is the answer of your question. In question number 2, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. Let us start question number 2. Circle is given and two chords are equal to each other. Let us start given AB is equal to CD means two chords. So prove AE is equal to CE, AE is equal to CE. So we have to prove AE is equal to CE, AE is equal to CE and EB is equal to ED, EB is equal to ED. So we have to construction. We draw OM perpendicular CD, OM perpendicular CD and OL perpendicular to AB. Proof OL is equal to OM because equal chords are at equal distance from the center of a circle. So we have to take in triangle OEL and triangle OEM. Compare it. OL is equal to OM, result means ये given है. OE is equal to OE, कॉमन है दोनों में. एंगल OLE and angle OME each 90 means perpendicular line है. We have to draw perpendicular OM perpendicular CD and OL perpendicular AB. So these two triangles are congruent. Criteria is RHS means right angle, hypotenuse and side. So EL is equal to EM by CPCT means corresponding part of a congruent triangle. OL perpendicular AB
so angle B is equal to half LB side is equal to half of AB, and OM perpendicular CD means MD is equal to half of CD. So AB is equal to CD given, and LB is equal to MD. इक्वेशन में कर लिया आपने सेकंड. बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स ई एल प्लस एल बी एंड ई एम प्लस एम डी, यानी ई एल प्लस एल बी ई एम प्लस, दोनों इक्वेशन को आपने ऐड करना है. यू गेट ई बी प्लस इज इक्वल टू ई डी. सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन 4. Subtracting equation third from fourth, we get AB minus EB is equal to CD minus ED. We get AE is equal to CE. So hence proof this is the answer of question number second. Let us start question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chord. Let us start question number 3. Same diagram of previous question is given. Two equal chords हैं given. AB is equal to CD. Prove angle MEO is equal to angle LEO. Angle MEO LEO के equal है. Construction we draw similarly as previous question. OM perpendicular CD and OL perpendicular AB. So in proof, OL is equal to OM because equal chords of a circles are at the same distance from the center. So in triangle OEL, we have to take triangle OEL and OME या OEM. OL is equal to OM, result OE is equal to OE, common in both triangle, and angle OME is equal to angle OLE, each 90 degree. So two triangles are congruent with criteria RHS. So अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. एंगल MEO is equal to angle LEO, hence proved. Let us start question number 4. If a line intersects two concentric circles with the center O at A, B and C and D, prove that AB is equal to CD. Let us start. Two concentric circle means having same center is given. So we have A, B, C, D and OL perpendicular AD. Let us start. Given two circles are concentric, prove AB is equal to CD, means AB is equal to CD आपने फाइंड करना है. कंस्ट्रक्शन वी ड्रा OL परपेंडिकुलर AD. प्रूफ के अंदर पॉइंट लिखेंगे. फॉर लार्ज सर्कल OL परपेंडिकुलर AD, सो OL perpendicular AD, so AL is equal to LD. अगर ये परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर तो ये बाइसेक्ट करता है, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करती है AD को. सो AL is equal to क्या होगा, LD. इक्वेशन फर्स्ट. फॉर स्मॉलर सर्कल OL परपेंडिकुलर BC, सो BL is equal to LC होगा. BL is equal to LC. So we have to subtracting equation second from first. It means AL minus BL, we get AB, then LD minus LC, we get CD. Hence proof. Question number 5. Three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on the circle of radius 5 centimeter, 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma.
if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, so what is the distance between Reshma and Mandeep? Let us start question number 5. Three girls Reshma, Salma, Mandeep and are standing at the circumference of circle as point A, B and C. A, B and C. So distance between them means AB is equal to BC is 6. ये भी 6 गिवन है और ये भी 6 गिवन है. We join OA, OB and OC. OA, OB and OC इसको ज्वाइन कर लिया. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू AC. डिस्टेंस इनके बीच में क्या है? AC. एंड AC इज इक्वल टू डबल ऑफ AD. मीन्स AD अब निकालेंगे उसका डबल करेंगे तो यू गेट AC. लेट OD इज इक्वल टू X. OD इज इक्वल टू X. तो OB कितना होगा? रेडियस 5 है यानी 5 माइनस X DB. रेडियस OB हो गया 5, देन DB 5 माइनस X. ये कितना बन जाएगा? 5 माइनस X. सो DB इज इक्वल टू 5 माइनस X. इन राइट ट्रायंगल OAD Pythagoras S square is equal to P square plus B square means OA square is equal to AD square plus OD square. So put the value 5 square AD square plus OD is X square. AD को एक साइड रखेंगे, X इस साइड आके माइनस. यू गेट द इक्वेशन. फर्स्ट इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB and D, same formula. AB square means hypotenuse square is equal to P square plus B square or B square plus P square. AD square plus DB square प्लस का DB इस साइड आके माइनस. वैल्यू फिट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस X होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिस वन इज AD स्क्वायर, इट इज़ आल्सो AD स्क्वायर. बाय कंपेयरिंग अगर AD स्क्वायर दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम. तो बाय कंपेयरिंग 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस X होल स्क्वायर. 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू 6 तो 36 माइनस A माइनस B होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 25 प्लस X स्क्वायर माइनस 5 टू द 10X. So 25 minus X square 36 minus 25 minus X square plus 10X. So 36 इस साइड आके माइनस, माइनस का इस साइड आके प्लस, माइनस का X स्क्वायर इधर आके प्लस, कैंसिल हो गए. यू गेट 14 इज इक्वल टू 10X. सो X इज इक्वल टू 14/10 मीन्स 1.4. So OD is equal to X is equal to 1.4. Put the value of OD in equation first. So we get AD square is equal to 25 minus X square. Put the value of X 1.5 whole square means 1.96. Cancel करेंगे माइनस करके 23.04. Then we have to find the root. The root is 4.8 meter. So AC is equal to double of AD means double of 4.8 is equal to 9.6 meter. So the distance between Reshma and Mandeep is equal to AC is equal to 9.6 meter. Thank you. Have a nice day.